Hi everyone. Good evening. Good evening. Sat Shri Akal. Ram Ram. So this is our first class on Unacademy app of our revision batch. Yes. So how was the class on YouTube today? Did you feel the revision starting, huh? Good evening, Priyanshi. Good evening, Prachi. हाँ जी, so कौन कौन आ गया देखे जरा. प्राची, वैष्णवी, रोहन, कुणाल, मानसी, तेजस, राशि, विवेक, Priyanshi, Sankrita. Okay. Thank you. Thank you, Priyanshi. Thank you, Manu. Okay. So this is going to be our accuracy series, not just PYP. It is again, session 1. PYP, हम लोग 11 sessions were already done. Though it is the series of previous year passage. Thank you, Sankrita. Though it's going to be the series of previous year passage, but here we're going to be concentrating more on accuracy. Yes. Abhi tak to aisa hota tha that I used to advise you, suggest you to concentrate more on accuracy part, but here I would be taking care of it, that in another 2 to 3 weeks, okay, you would be working more on accuracy. Then the next month, or later in this month, we'll start working on your speed as well, which is, I always say that speed is usually the output. Okay, when you talk about speed is the output. Speed is something you cannot concentrate. You need to concentrate only on comprehension, understanding and decoding the types of questions and everything. Speed is a byproduct. It comes on its own. Okay, chaliye. So let's move ahead, guys. अब क्या है, अब अगस्त आ गया है, and we are looking ahead. November 28th, cat. So अब गिरने का समय खत्म है, अब गिरना नहीं है, क्योंकि गिरेंगे तो फिर जो स्पीड है वो कम हो जाएगी. कौन सी? अपनी आगे बढ़ने की जिंदगी में. एग्जैक्टली. तो अब गिरने से काम नहीं चलेगा. अब सिली मिस्टेक्स और ये उप्स मोमेंट जो होते हैं ना, अरे फिर तेरा वैष्णवी फिर पैनिक बढ़ रहा है. कोई पैनिक नहीं है. डेट तो है ही, आनी है, अच्छा है, बल्कि मुझे तो खुशी हो रही है. अच्छा है, इतनी प्रिपेयर कर रहे हो, डेट आएगी तभी तो आगे बढ़ेंगे. कोई डर वर की बात नहीं है. दिल को जो लगाओगे उसको वही लगेगा. ठीक है, तो रुकना नहीं गाइस, बढ़ जाओ आगे. चलो, सो अपना PYP 01, why 01, why session 1, because now it's gonna be #accuracy series. Okay, we'll have a detailed discussion and everything, but small changes. Okay, the way we used to solve previous year passages. Done? Yes, exactly. Mansi ने कह दिया है, वैष्णवी, no panic. You're gonna rock. You're a rock star. हम जो मानेंगे अपने बारे में वही सच होगा. हम जो भी मान लेंगे अपने बारे में वही सच होगा. अगर हम अपने आप को बताएंगे पैनिक है तो पैनिक भी सच हो जाएगा, और अगर हम बताएंगे कि कोई पैनिक नहीं है, हम जब मेहनत कर रहे हैं तो फिर कोई इशू ही नहीं है, वो भी सच है. That's the thing about your mindset. Whatever you tell yourself, that is the only truth. चलिए आगे बढ़ते हैं. So people who are attending my session for the first time, let me introduce myself. Quick introduction. I am Gaurav Sharma. I'm an alumnus IIM Calcutta, and I've been helping students, contributing to their preparation for more than a decade now. I'm a published author, so I have some conviction when I talk about reading comprehensions and all. चलिए, those who are not a part of my Telegram group, this is my Telegram group, guys. आ जाओ, वहां पर भी काफी सारी बातें करते रहते हैं हम लोग. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये जो आप पूछते हो ना, कब सेशन है, क्या नहीं है, वहां पर होगा, नोटिफिकेशंस ऑन होंगे, आपके पास आता रहेगा. ठीक है, चलिए. Before we move ahead, guys, let me just remind you again, if you've not subscribed to Unacademy's Plus or Academic course, these are the details, these are the features. Quickly make up your mind and move ahead, guys. This is the fee structure. Always go for long term. Jitna long term jaoge, utna hi cost benefit. Cost wise, it will be effective. Number 1, number 2, when you do that, you can always use my code. That's GSMBA. That's my name and your dream. That will give you 10% additional benefit. Okay. So make up your mind, guys, and quickly move ahead. These are the upcoming batches. My course, people keep asking me about my course of Plus this month. So this month I'll be starting my course in second week of August. Okay.
चलिए, now this is cat iconic always I talk about. This is more of customized program. It is like, you can discuss exam strategies or concepts, as per, individually, like, it will be customized. चलिए. So, this is going to be our accuracy series, first session, and we'll be solving a passage together, which is going to be a passage of previous year. Shreyas, ये revision batch है for 21. Okay, for 22, cat 22 जो लोग टारगेट कर रहे हैं, आपके पास three type of classes are there: YT, special class, and your plus. ठीक है? If you're not a part of plus, then these two only you can attend. YT पे और special पे, cat 22 के लिए YT पे होता है 9 AM and special भी होगा 9 AM. ये on alternate day चलता है. ठीक है? It's my beginners batch I started on VARC. VARC का beginners batch है ये. ठीक है, आज फर्स्ट डे, इसलिए मैं काफी सारा इसको रिपीट कर रहा हूँ. जल्दी जल्दी से इंफॉर्मेशन इसको क्लियर रखो माइंड में. नाउ whatever generic questions you have, put it on hold for some time. We're going to be concentrating on our passage. Quickly give me thumbs up guys if you are ready. Shreyas, Sumit, Lokeshwar, not in emojis guys. Emoji मुझे पता नहीं लगता who all are ready. Like Vaishnavi just said, why means yes. So Vaishnavi is ready. Lakshay, Priyanshi, quick guys, quick. Tejas, Himesh, शिक्षिता, सागरिका, विकी, सुचिता. विकी के यस पे जेड लिखा हुआ आ गया और मेरे को स्माइल आ गई, और बाकी जो लोगों को पता है उनको भी आई होगी. बाकी लोग छोड़ दो, कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं है. चलिए, दिव्यांशी आ गए हैं आप भी, तो हम आगे बढ़ रहे हैं हम. हाँ, सो अप्रोच क्या रहेगी, हम लोग पहले पैसेज करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करके उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे. बट नाउ थोड़ा सा चेंज है एक्यूरेसी सीरीज में, थोड़ा सा चेंज होगा. सो यू नीड टू फॉलो सर्टेन रूल्स. कहां से पैसेज है वो बता दूंगा बाद में. ठीक है? This is also for sure. I've been asking you guys that please pay attention on main idea. 70% अपना concentration इस पे रखो कि कहानी समझ में आ जाए क्या है. Supporting details अगर परेशान करती हैं तो उनकी लोकेशन आपको थोड़ा सा mentally रखना है कि कहाँ होगा वो. Okay? Now, rules before we start of our accuracy series. So, rules ये होंगे that कितने भी pages. So pages means every slide I talk about. Okay? So जितने भी pages का passage होगा, I'll be waiting 2.5 minutes. Okay, on every page. That will be 150 seconds. That can be a little less for somebody. That can be more. But इसके बाद में please don't ask me to wait or don't tell me to go ahead also. Proper 2.5 minutes I'll be giving to every page. ठीक है? Now, when you read this page, this slide on which the passage is there or a part of the passage is there, please mute me, because I know I might keep talking as new students join and they ask questions also, whatever. You're not supposed to look into questions and everything. I'll keep talking to students who are joining late also. Okay? After reading, okay, after reading that particular slide, so okay, for example, the passage comes in 3 slides. Okay? ओके से ओके बोलो यस बोलते रहो. हाँ ऐसे मुंडी हिलाना पड़ेगा, है ना. वो पता तो दिखती तो है नहीं यहाँ से, तो इसलिए YN लिखते चलना पड़ेगा कि समझ में आए कि हाँ भाई बच्चे बैठे हैं सामने और सुन रहे हैं. सो हर पेज के बाद में 150 सेकेंड्स के बाद में आई विल बी गिविंग यू 1 minute to write what you understood about that paragraph. Okay, what you understood about of that particular slide, that particular information, you would be writing. Yes, not here in the messages, for yourself. Okay, for yourself you'll be writing it. Done? Then 60 to 90 seconds I'll be giving you for each question. Chalega? So I have a stopwatch with me. You want to keep it for yourself, that's up to you. आराम से अपने आप को ready कर लो. Okay? ठीक है? 60 to 90 seconds for each question I'll give you. That ways is going to take more time than it's than usually what you would be taking, but we'll be concentrating more on accuracy, or rather only on accuracy, not on the time and everything. Clear hua? Okay, just read it. Just read it again and keep it clear in your mind that how we're going to solve the passage. Okay, done? Chaliye. So I'm giving you the first slide of the passage, which is on your screen now.
2.5 minutes you guys will be getting for every slide. Which is really not less. Okay. Deepika, Saurav, you guys have just joined. You do not know how are we going about it. This is accuracy series where we're giving more time to understand the passage and then we'll go to questions. This series, we are not concentrating much on speed or something. We're just concentrating on accuracy. So we're giving more time to our reading and everything. And then let's see that, how much do we, are we able to capture the essence or something. Rituraj, Batman, Deepika, Anushka. Deepika, Anushka, okay. Sounds interesting though. Deepika, Anushka, you guys are late. People are reading, and 2.5 minutes they're getting for every slide. Right. So 2.5 minutes are over, guys. 2.5 minutes are over. Now you need to write. Take a minute and write what you understood. Okay, you're not supposed to write sentences or something. Just make notes, slangs, vernacular, whatever you understood of that slide. Just write it down. Maybe keywords or something. जिससे भी समझ में आ जाए आपको कि क्या है. Okay, just write down. Take a minute and write down whatever you understood of the passage. You please take care of yourself and everyone at home, Suchita. Right. So 1 minute is over, guys. Let's go on to the next page. Your time 2.5 minutes, 180, 2.5 minutes, 150 seconds. Start now. जिन्होंने मुझे म्यूट नहीं किया म्यूट करते रहो because I'll keep talking to students who are joining new. Swapnil, you've joined late. It is an accuracy series where every student is getting 2.5 minutes for a slide to read.
Lakshya, you're not supposed to write done in everything. I'll, as it is, go ahead after 2.5 minutes. Okay, so the time is up, guys. Now, take 1 minute to write down in your language, vernacular language, in your notes, anyways, whatever you understood of this slide. Okay, in continuation to first slide, the first page. Okay, you read 2 pages out of 3 pages. Just keep writing down whatever you understood. You'll get 1 minute for this. Ashutosh, why late? स्वरा, अब एक काम करो, थोड़ा रुको साथ में, एक just stay there for 5 minutes and then you can be a part of the discussion. Okay, because people are already reading their passage and they're doing what they're being asked to read, to do rather. Okay, so your 1 minute is over. Okay, so now I'm taking you to the third and the last slide of the passage, which talks about, again, few more things. Go ahead, guys, read. कोई बात नहीं आशुतोष, it's okay. Just stay there and we'll start again. अभी करता हूँ मैं बस इसके बाद, once the people have read their passage or something. Swara, Ashutosh, Shreya, you guys just need to, Swapnil, you guys need to just wait a little, then you'll be a part. Don't worry. Rishika, you were late, so you need to wait now. I'll again, tell everybody what's exactly happening. Okay. Naman, Rishika, whoever is joining late, stay there for some time, and time is over, guys. Time is over, time is over, time is over. Now let's talk. Now, whoever has read the entire passage, quickly type Y. Yes, quickly type yes in the chat box. Let me see who all have read the passage. Rohan, Priyanshi, Lakshya, Sujan. Quick, everyone. So the 2 tasks I gave you, one is reading the passage, okay, and the other is writing, the main idea, basically, what all you understood, the story I keep talking about. Kunal says almost. Okay, that's okay. That's absolutely okay.
Now, the agenda has to be very clear in your mind, guys, that you are, these sessions, I'm not giving you to practice your passage. Otherwise, what do I do? See, I'll just give you a passage and I sit down here and you keep solving. That's not the class, okay? You can do that on your own. You can do that on your own. So, whenever you come for my class, if you come for 1 hour for RC, I'll give you some insight, okay? Some insight, some realization, some feeling. Done? So, now we're not going to go for questions. We'll go later. अभी आपने पैसेज पढ़ लिया पूरा, आपने लिख लिया, आपको जो समझ में आया उसके बारे में. अब आप क्या करेंगे? I'm going to read it with you all, okay? Together we will be reading and then you will be correcting your own main ideas, whatever you've written, okay? And any doubts and all you have, talk to me first about that. Let's, get it clear. Then we'll go on to the questions. Okay? Now let's read with me and we'll have a quick reading, okay? Since World War II, the nation state has been regarded with approval by every political system and every ideology. Okay? कोई issue नहीं है. In the name of modernization in the west, of socialism in the Eastern Bloc, and of development in the third world, it was expected to guarantee the happiness of individuals as citizens and of peoples as society. ठीक है? नेशन स्टेट सबने एक्सेप्ट कर लिया और कहा यह गया कि आपको खूब खुशी मिलेगी, सब कुछ होगा, आपको चीजें मिलेंगी अपने अपने जैसे होनी चाहिए. Right? However, the state today appears to have broken down in many parts of the world. Done. It has failed to guarantee either security or social justice. यानी कि नेशन स्टेट की अगर मैं बात कहूं यहां 3 लाइनों तक, तो नेशन स्टेट से हमारा जो ऑथर है वो बहुत ज्यादा अग्री कर नहीं रहा है कि उन्होंने हमको बेसिकली कॉन्सेप्ट बेचा है नेशन स्टेट बोल के. ठीक है? ऐसा कुछ है? हाँ या ना, वाई और एन करते चलो जल्दी जल्दी. ओके? हाँ जी. So, however, the state today appears to have broken down. Okay, you always see the kind of the words the author selects to convey his thought. अपने आप आपको उसकी tone, उसका bend समझ में आएगा. And you'll start understanding how these authors जिनके passages आते हैं वो कैसे लिखते हैं, and why certain topics are selected, why certain questions are being made. In many parts of so it has failed to guarantee either security or social justice and has been unable to prevent either international wars or civil war. Na to andar ruka, na bahar ruka. Disturbed by the claims of communities within it, the nation state tries to repress their demands and to proclaim itself as the only guarantor of security of all. भाई आज हमको ये थॉट ही नहीं आता ना कि अपन डेमोक्रेसी हटा दें, अपन प्राइम मिनिस्टर्स और इन सबको हटा दें, अपने हाथ में ले लें. तो थॉट ही नहीं आता. क्यों? क्योंकि हमको गारंटर लगता है कि वहीं से सिक्योरिटी पूरी मिलने वाली है. In the name of national unity, territorial integrity, equality of all its citizens, and non-partisan secularism, the state can use its powerful resources to reject the demands of communities. It may even go so far as genocide to ensure that order prevails. Right? आती बात समझ में? बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ना कि राइट विंग होते हैं, लेफ्ट विंग होते हैं, नेशन स्टेट होता है. अब देखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है सर मेरे को पॉलिटिकल पैसेज समझ में नहीं आता, मेरे को साइंस समझ में नहीं आता. अब देखना, अगर नाम पे तो ये नेशन स्टेट है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल है, पर देखते हैं क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें. आ जाओ. एज वन ऑब्जर्व्स, अब सेकंड उस पे चलते हैं. यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया ऑथर का कि वो बेसिकली नेशन स्टेट को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर नहीं रहा है. इतना सा पॉइंट भी क्लियर हुआ है तो बहुत है. As one observes the awakening of communities in different parts of the world, one cannot ignore the context in which identity issues arise. ठीक है? It is no longer a context of sealed frontiers and isolated regions, but is one of the integrated global system. In a reaction to this trend towards globalization, individuals and communities everywhere are voicing their desire to exist, to use their power of creation, and to play an active part in national and international life. They're just demanding it, they're desiring it. There are two ways in which the current upsurge in demands for the recognition of identities can be looked at. Kya demands, kya ways hain wo? On the positive side, the efforts by certain population groups to assert their identity can be regarded as liberation movement, liberal liberation. Liberation की बात कब होती है कि हमको हमारे तरह से रहना है. Challenging oppression and injustice. खुला बिल्कुल ऑथर ने injustice बोला है, एकदम सीधा सीधा. What these groups are doing, proclaiming that they are different, rediscovering the roots of their culture, or strengthening group solidarity, may accordingly be seen as legitimate attempts to escape from their state of subjugation.
may accordingly be seen as legitimate attempt, यानी किसकी इसकी गवर्नमेंट की तरफ, नेशनल स्टेट की तरफ तो है ही नहीं, अपन उनका तो वर्ड कोई पॉजिटिव यूज हो ही नहीं रहा है. To escape from the state of subjugation and enjoy a certain measure of dignity. देखो इनके लिए सारे measures, सारे words positive आ रहे हैं. On the downside, however, militant action for recognition tends to make such groups more deeply entrenched in their attitude and to make their cultural compartments even more watertight. The assertion of identity then starts turning into self-absorption and isolation, and is liable to slide into intolerance of others and towards ideas of ethnic cleansing, xenophobia, and violence. So he's somewhere, giving supportive argument also that ये छोटे छोटे groups अपनी अपनी identity, अपनी अपनी demands, अपनी desire just to exist उसको भी करने के लिए they turned into violent groups or territorial xenophobia and all happens, right? समझ में आ रहा है? When I always say 30 to 40% समझ में आता है, that's enough? Yes or no, guys? Tell me. अपने को ब्लॉक्स हटाने, एक्यूरेसी सीरीज में I'll keep your blocks aside. मेरे को ये वाला टॉपिक नहीं होता है, मेरे को वोकैब की वजह से समझ में नहीं आता है, जल्दी के नाम पे जल्दी जल्दी पढ़ने से काम नहीं होता है, ठीक है? Now listen to it now. Whereas continuous variations among people prevent drawing of clear dividing lines between the groups. Those militating for recognition of their group's identity arbitrarily choose a limited number of criteria such as religion, language, skin color and place of origin. अब स्किन कलर की बात हो गई तो ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे पूरा पैसेज, इंडियन पर्सपेक्टिव पे नहीं है सिर्फ, राइट? So that their members recognize themselves primarily in terms of the labels attached to the group whose existence is being asserted. This distinction between the group in question and other groups is established by simplifying the feature selected. ठीक है, अपन ने उस ग्रुप को बनाने के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए जिससे आपस में आइडेंटिटी, क्योंकि सारी कहानी किसके लिए? आइडेंटिटी के लिए. सो आपने कुछ कुछ बेसिक टर्म्स ऐसे उठा ली जिनसे अपन जल्दी से एसोसिएट कर सकते हैं खुद की आइडेंटिटी को. वहां तक हो गया. Simplification also works by transforming groups into essences, abstractions, and endowed with the capacity to remain unchanged through time. इस तरह से भी ग्रुप बनते हैं. कैसे? In some cases, people actually act as though the group has remained unchanged and talk, for example, about the history of nations and communities if these entities survived for centuries without changing, with the same ways of acting and thinking, the same desires, anxieties, and aspiration. Paradoxically, अब पैराडॉक्स आएगा यानी कि कुछ तरह का ऐसा क्वेश्चन बनेगा वहां पर जिसका आंसर नहीं है अपने पास. पैराडॉक्सिकली, precisely because identity represents a simplifying fiction, creating uniform groups out of desperate people, that identity performs a cognitive function. Cognitive क्या होता है? What is cognitive? Something related to mind. हमको ऐसे दिखने में हम अलग से दिख जाए वो वाला नहीं चाहिए. It enables us to put names to ourselves and others from some idea of who we are and who others are, and ascertain the place we occupy along with the others in the world and society. So basically, if you understand the concept of identity, see, हम लोग एक सेकंड में बोल देते हैं ना, where are you from? और उस जगह को हम आइडेंटिटी लेके चल जाते हैं. जब हम इंडिया से बाहर जाते हैं तो हम इंडिया को आइडेंटिटी लेके चल जाते हैं. हम अपनी सिटी में जाते हैं तो एक पर्टिकुलर रीजन को अपनी आइडेंटिटी लेके चल जाते हैं. कई बार हम अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं अपने स्ट्रीम से, कॉमर्स के कौन है, साइंस के कौन है, career wise बना लेते हैं. So all this, if you see, the entire effort is going towards getting our own identity. So when you look at the entire all those groups which are looking for their identity with this perspective, you don't find it wrong. Yes or no? आता है समझ में? The current upsurge to assert the identity of groups can thus be partly explained by the cognitive function performed by identity. However, that said, people would not go along as they do, often in large numbers, with the propositions put to them, in spite of the sacrifices they entail, if there was not a very strong feeling of need for identity, a need to take stock of things and know who we are, where we come from, and where we are going. Can I give you 2 words only for these two slides? One is nation state, its structure, and second is identity. क्यों हम इसके बहुत ज्यादा फेवर में नहीं हैं? ये 2 वर्ड 2 स्लाइड से समझ में आ रहे हैं? आइडेंटिटी चाहिए, नेशन स्टेट से बहुत ज्यादा फायदा हुआ नहीं है. ये फर्स्ट पेज था, सेकंड पेज टॉक्स अबाउट ओनली आइडेंटिटी. ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है कि कोई क्वेश्चन की डिटेल्स में से आएगा तो देखेंगे, अभी कोई जरूरत नहीं है समझने की. Let's understand the last page, how he concludes, because the passage is very complete in itself. So it definitely conclude करेगा यहाँ पे. Identity is thus, देखो आ गया,
a necessity in constantly changing world, but can also be a potent source of violence and disruption. देखो conclusion वाली feeling आ रही है, yes or no? How can these two contradictory aspects of identity be reconciled? एक तरफ वायलेंस है, डिसरप्शन है, एक तरफ नेसेसिटी है, इनको रिकंसाइल कैसे करें? First, we must bear the arbitrary nature of identity categories in mind, not with a view to eliminating all forms of identification, which would be unrealistic since identity is a cognitive necessity. Mind, cognitive मतलब mind, ये चाहिए हमको. But simply to remind ourselves that each of us has several identities at the same time. Second, since tears of nostalgia are being shed over the past, we recognize that culture is constantly being recreated by cobbling together fresh and original elements and counter cultures. There are in our own country a large number of syncretic cults, alag-alag, wherein modern elements are blended with traditional values, or people of different communities venerate saints or divinities of particular faiths. पहले वाले भी कंटिन्यू है और अब भी मॉडर्न भी हो रहा है. सो बेसिकली कमिंग ऑन टू कि आप एक आइडेंटिटी को, अपने ग्रुप को एक आइडियल फॉर्म में भी लेके चल सकते हो, व्हिच इज आइडियल. क्या होता है? अ ब्लेंड ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. यस और नो? Such cults and movements are characterized by continual inflow and outflow of members, which prevent them from taking on a self-perpetuating existence of their own and hold out hope for the future indeed. Perhaps for the only possible future. Otherwise, तो सब बिखरता जाएगा. Finally, the nation state must respond to the identity urges of its constituent communities and to their legitimate quest for security and social justice. ये line बहुत important है. Finally, the nation state must respond to the identity urges of its constituent communities. हम नॉर्थ ईस्ट जाएंगे. अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाओगे और अगर आप यहाँ बैठ के नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ते हो, अगर आप बोर्डोस के बारे में पढ़ते हो, तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है. बट they are also asking for their Bordeaux land. When you go there, when you start reading the literature which doesn't come to you here, so you start feeling कि यार नहीं, ये सही तो कह रहे हैं. Basically again you go right or wrong से परे अगर डिटेल में जाओगे तो you'll understand that they're also looking for social justice and identity. So ये वाली बात यहाँ पर है कि finally the nation state must respond to the identity urges of its constituent communities and to their legitimate quest for security and social justice. It must do so by inventing what the French philosopher and sociologist Raymond Aron called peace through law. Law किस लिए हो? जिससे peace आए, इसलिए नहीं कि खूब सारा revolution हो जाए. That would guarantee justice both to the state as a whole and its parts, and respect the claims of both reason and emotions. The problem is one of the reconciling nationalist demands with the exercise of democracy. The problem is one of reconciling nationalist demands with the exercise of democracy. अच्छा, एक तरफ तो आप डेमोक्रेसी बोल रहे हो कि आपको ऑफ द पीपल फॉर द पीपल चाहिए, और दूसरी तरफ आप नेशन स्टेट यानी नेशनलिस्ट ही रखना चाहते हो. चलो आगे बढ़े, क्वेश्चंस पे आए. अब बताओ, बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चंस, यू रेड द पैसेज एंड यू रोट समथिंग. मैच हो रहा है दोबारा जब अपने साथ में पढ़ा तो एक बात. दूसरी बात आपको चेक करनी है कि हम हर वर्ड पे रुके नहीं, हमने एक एक चीज का कोई कोई ट्रांसलेशन नहीं किया है. ऑलमोस्ट ही समझ में आएगा. वैष्णवी कभी भी, अच्छा ओके आई गॉट इट. सो ये दो चीजें देखनी है अपने को कि हमने जो मेन आइडिया उठाया वो था. टाइम हमको कितना लगा? अगर मैं पूरा पैसेज की बात करूं तो मैंने आपको 7.5 मिनट्स दिए थे. ठीक है, 7.5 मिनट्स आपके पास थे टू रीड द पैसेज एंड एवरीथिंग. ठीक है, सो अब देखते हैं जरा क्वेश्चंस में ठीक से समझने से कुछ हेल्प हुई है नहीं हुई है. लेट्स गो अहेड एंड सी. ओके, एक चीज माइंड में क्लियर रखना गाइस कि इफ यू गेट द मेन आइडिया एंड एवरीथिंग, ऐसा नहीं होगा कि हर क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आपको फिर देखते ही मिल जाएगा. नो, पर एलिमिनेट हो जाएंगे राइट ऑप्शन. जो रॉन्ग ऑप्शंस होंगे उनका एलिमिनेट होना आसान हो जाएगा. एंड देन आउट ऑफ 2 जिसमें समझ में नहीं आ रहा, वी कैन गो बैक एंड सी, दोबारा पढ़ के उसको. डन. चलो, नाउ रीड द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस ऑन योर स्क्रीन. According to the author, happiness of individuals was expected to be guaranteed in the name of. अमन नमन रुको, अभी जेनरिक क्वेश्चंस नहीं.
happiness of individuals was expected to be guaranteed in the name of. पोल आ रहा है, पोल आता है, पोल आता है, सॉरी सॉरी सॉरी. Very good. 50% people are getting it right. But why only 50%? Shikshita, Himesh, Atharv, Saloni, Vaishnavi, Naman, Priyanshi, Anushka. Now, look at this question, guys. Just simply tell me. You've understood the main idea. Identity की बात हो रही है, नेशनल स्टेट ने जस्टिस नहीं दिया, इसकी बात हो रही है. फिर आइडियल बात होती है कि नेशनल स्टेट को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, है ना? हाँ. अब बहुत सिंपल सी बात है, एक बार बताओ, डेवलपमेंट इन द वेस्ट, मॉडर्नाइजेशन इन द ईस्टर्न ब्लॉक, इनकी तो बात ही नहीं हुई. सिर्फ और सिर्फ थर्ड वर्ल्ड की बात हुई थी. आपको 3 एग्जाम्पल दिए थे, उसने 3 पॉइंट्स दिए थे, उसमें सिर्फ ये आया था डेवलपमेंट इन द थर्ड वर्ल्ड. यस और नो? यू वांट मी टू गो बैक एंड टेल यू? हाँ जी, ये देखो. Since World War II, the nation state has been regarded with approval by every political system and every ideology in the name of modernization in the West, of socialism in the Eastern Bloc, and of development in the Third World. It was expected to guarantee the happiness of individuals as citizens and and of people as societies. Direct question था पैसे से. Yes, बिल्कुल सही बात. अब इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? इट इज डायरेक्ट. ठीक है, बढ़े आगे. हाँ जी, चलो. सो सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, गाइस. बोल दिया जाए. वेरी गुड. 60% people are getting the right answer. बहुत बढ़िया. More than that. वैष्णवी, लक्ष्य, स्वप्निल, ऋषिका, आशीष, रोहन, प्राची, अनुष्का, सलोनी. What made you think 1 2 3? तीनों दिया हुआ है ना, क्लियर क्लियर एकदम. विवेक, मनु, कुणाल, सुजान. बहुत बढ़िया. राशि, नाइस. Okay. Vaishnavi, Anushka, Saloni, Naman, Swapnil, Vidanshi, they're getting 2 on 2. ठीक है. One more question, guys, on your screen. Here it is. स्वरा, वैष्णवी, very good. शाबाश. लक्ष्य, बहुत बढ़िया. And people who are getting it wrong, I'll tell you after this why. तेजस, स्वप्निल, अनुष्का, मनु, सलोनी, सुजान, लक्ष्य, वैष्णवी, स्वरा.
Nice. So we still have 4 people who are getting 3 on 3. अरे बाबा, ओ गौरे, प्रियांशी आया ना समझ में? बिल्कुल आना ही था, गलती करके समझ में आता है. अनट्रू. हाँ, अनट्रू. अब बताना जरा कितने लोगों ने गलती की है? नमन, ये गलती करने का टाइम है रिवीजन बैच में, है? बताओ. प्रॉमिस करो, चलो. नो सिली मिस्टेक्स. गिरना नहीं है. रुकना तो है ही नहीं, ऑब्वियसली रुकना तो जिंदगी भर नहीं है. हाँ. सो इजी था. अब बताओ. I when I read with you all, I did not stop on any detail. I did not stop on any word which is which you might feel मुश्किल है क्या है. बट हमने 3 चीजें समझी थी बस, कि नेशन स्टेट जो है वो जस्टिस नहीं दे रहा, आइडेंटिटी जो है वो चाहिए, और आइडियल ये होगा कि नेशन स्टेट इसको प्रॉमिस करे. ठीक है. अदरवाइज आइडेंटिटी से क्या क्या हो जाता है, ये वाला कुछ कुछ दिया हुआ था कहानी. अब आइडेंटिटी रिप्रेजेंट्स क्रिएटिंग, एक सेकंड आगे चलते हैं, गंदा हो गया. आइडेंटिटी रिप्रेजेंट्स क्रिएटिंग यूनिफॉर्म ग्रुप्स आउट ऑफ डिस्पैरेट पीपल, दिया हुआ है. हाँ, उन्होंने कहा था ना, कल्चर रिलीजन इसके बेसिस पे अलग अलग कर लेते हैं. आइडेंटिटी इज अ नेसेसिटी इन द चेंजिंग वर्ल्ड. ऑथर ने तो भाई, अपन ने क्या बात की कि ऑथर आइडेंटिटी को सपोर्ट कर रहा है. ऑथर आइडेंटिटी को सपोर्ट कर रहा है. उसने उसका एक आर्ग्यूमेंट दे दिया, एक रीजन दे दिया कि चाहे टेररिस्ट ग्रुप्स हो गया, वो कैसे बन जाते हैं. ठीक है. एंड आइडेंटिटी इज अ कॉग्निटिव नेसेसिटी. 3 बार ये वर्ड आया था, तो इसलिए मैंने आपको बताया भी था. जहां पर भी COGN देखेंगे अपन, रूट, वो क्या होता है, समथिंग रिलेटेड टू व्हाट होता है. COGN इज रिलेटेड टू व्हाट? बोलिए बोलिए. हाँ, समथिंग रिलेटेड टू अवेयरनेस, माइंड. ओके. अनट्रू ने की. एग्जैक्टली स्वरा. हाँ, ठीक है. चलो जी, वन मोर क्वेश्चन. वन मोर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. खोल दिया जाएगा. गरिमा, बहुत लेट ज्वाइन किया बेटा. अच्छा, गरिमा ने लेट ज्वाइन करते आंसर कर दिया. फटाफट पढ़ो. चलो जी, बहुत बढ़िया. श्रेया, विकी, गरिमा, आशुतोष, रोहन, वैष्णवी, अनुष्का. सी स्टिल ओनली 25% पीपल आर गेटिंग द राइट आंसर. क्यों, मुझे समझ में नहीं आता. क्या करते हो, सोच के नहीं करते हो, क्या करते हो बेटा? Let's see the leaderboard first. Vaishnavi, Anushka are getting 4 on 4. Saloni, Swapnil are getting 3. Rohan is getting 2. और है क्या इसमें? One more question on your screen, guys. Quick. अच्छा, रुको. हाँ, पहले बताओ इसमें किसको क्या डाउट है? Then why 25% people only got it correct? According to the author, the nation state. Don't look for the options first. नहीं, पहले रुको, ऑप्शन मत देखो, मुझे बताओ कि अपना ऑथर जो था वो फेवर में था नेशन स्टेट के. नेशन स्टेट ऐसे नहीं कि नेशन स्टेट नहीं होना चाहिए. मैंने कहा नेशन स्टेट तो उन्होंने हमको बेचा माल कि नेशन स्टेट लाएंगे, नेशन स्टेट लाएंगे. फिर नेशन स्टेट के नाम पे जस्टिस और वो नहीं मिला. बार बार उसने वर्ड यूज किए, इनजस्टिस, इनटॉलरेंस, है ना, इक्वालिटी नहीं मिली. सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी नहीं मिला. सिविल वॉर भी हुई, वर्ल्ड वॉर भी हुआ, दिया था ना. हाँ, बताओ. अब देखो, ये अकॉर्डिंग टू द ऑथर द नेशन स्टेट हैज फुलफिल्ड इट्स पोटेंशियल, पॉजिटिव हो गया है. तो जनरेट सिक्योरिटी, पॉजिटिव हो गया है. तो हैज बीन अ मेजर फोर्स इन प्रिवेंटिंग सिविल एंड, ये तीनों पॉजिटिव है. अगर सिंपल आपको एक बेसिक आइडिया समझ में आ जाएगा कि नेशन स्टेट. हाँ, वैभव लेट आयो ना, तो फिर क्या होगा, यही होगा. आए कब हो क्लास में, देखो.
out after 3/4 class is over. According to the author, the nation state. हाँ, रिजेक्शन पॉलिसी तो बिना रिजेक्शन के यू कैन नॉट अफोर्ड टू सॉल्व क्वेश्चंस. सो अगर आपको एक बेसिक आइडिया, मैं बार बार कहानी पूरे 3 महीने से गाए जा रहा हूं कि मेन आइडिया द मेन आइडिया वाज दैट ऑथर वाज इन एक नेशन स्टेट के नाम पे हमको बनाया गया है, हमारा काटा गया, ऐसे वाला फील था ऑथर का. यस और नो कि हमको सिक्योरिटी मिलेगी, हमको ये मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला. ओनली जस्ट सब्सक्राइब द बेल आइकन हो गया हमारे साथ, राइट? हाँ, क्लियर हो गया? Last question on your screen, guys. Try. Very good, Priyanshi. Vaishnavi, Rishika, Shabash. Hi, Rajiv. क्या बात है? अनुष्का, वैष्णवी, बधाई हो आप लोग को. 5 on 5. Saloni's got 4, which is 80%. Saloni, Swapnil, you guys are getting 80% accuracy. 4 on 5. Lakshya 3, Tejas 3, Priyanshi 2, Rohan 2, Rishika 2, Ashutosh 2. पहले लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. Which of the following views of the nation state cannot be attributed to the author? होंगे नेशन स्टेट के अलग अलग एट्रीब्यूट्स, लेकिन ऑथर ने जिसकी बात नहीं की है वो बात करनी है. इट रिप्रेजेंट्स द डिमांड्स ऑफ कम्युनिटीज विद इन इट. हुई है पूरी डिमांड्स या नहीं हुई है? हाँ जी, चलो अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले तो ये था आपका कैट 99 का द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट. अब मैं वापस वही बात रिपीट करूंगा फिर से गाइस. आप लोगों ने अभी, आप अगर पहले अपन एक बार थोड़ा सा डायसेक्शन कर लेते हैं पैसेज का. राजीव, आई विल कम बैक टू यू एंड आई आंसर योर क्वेश्चन, डोंट वरी. Okay, now 7.5 minutes you took in taking this reading the passage, and 1 minute each though I said, but still we did not take 1 minute, right? जिनको मेन आइडिया पकड़ में आया, जिनको सब कुछ क्लियर हुआ, सब कुछ क्लियर में वोकैब नहीं थी, सब कुछ क्लियर में फैक्ट्स नहीं थे, पीछे स्टिल हमको नहीं जाना पड़ा, एक ही क्वेश्चन था जो कि फैक्चुअल था, उसका भी अगर आपको एक फील था, टोन क्लियर था पैसेज का, तो वो भी आसान था, डिफिकल्ट नहीं था. ठीक है. सो 1 मिनट ईच अगर मैं मान भी लूं, 1 मिनट ईच अगर मैं मान भी लूं, तो 5 मिनट्स हो गए क्वेश्चंस के. नाउ दिस मेक्स 12.5 मिनट्स. 12.5 मिनट्स में 2 people here have got 5 on 5, rest 3 people have got 4 on 5, 3 on 5 भी हैं. Everything is there in front of you guys. I still do not understand that people who got their answers wrong. How you read with me, I read with you all. I just spoke certain lines twice and I stopped. I just I in the only first paragraph only, I just talked about the passage, what I understood, that where the author's bent is. Then we went to all the questions. We picked up every question and we did not even discuss it much. सारा का सारा author की जो एक tone थी. See, author की tone is not the question is asked in the RC. You need to understand कि basically क्या होता है, opinion या एक article होता है. अब आर्टिकल में लिखता हूं कि भाई आज की जनरेशन, हाँ, लक्ष्य, अनुष्का, प्रियांशी, स्वरा, राजीव, ये जो आज की जनरेशन है वो उसके बारे में लिखूंगा मैं.
ठीक है, सो मेरा एक टोन होगा ना, मैं उनके फेवर में हूं, मैं उनके अगेंस्ट बात कर रहा हूं, राइट। एंड उसी उसी तर्ज पे, उसी रिदम पे क्वेश्चंस होंगे। वंस यू अंडरस्टैंड दैट कि भाई ये एक्चुअली सर आप एक सेकंड कहना क्या चाहते हो, आप फेवर में नहीं हो क्या हमारे? नहीं नहीं मैं फेवर में हूं, लेकिन तुम लोग मानते नहीं, ऐसे यू नो। वंस यू गेट दैट कि आप हमारे फेवर में हो कि हमारे अगेंस्ट हो, आपके कितने ऑप्शंस रिजेक्ट हो जाएंगे। यस और नो? सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, ये जो कहना क्या चाहते हो वाली फीलिंग है, उसमें वो किस तरफ है ना। भाई मैं तो आप ही की तरफ हूं, या नहीं मैं तो उनकी तरफ हूं, ये तो समझो एक बार। नेशन स्टेट के बारे में तो था, पर नेशन स्टेट को तो when you read the passage with us again, it actually makes it more comprehensible. अच्छा, वैष्णवी ने कहा कि जब मैं पढ़ता हूं तो कॉम्प्रहेंसिबल हो जाता है, मान लिया। डू आई ट्रांसलेट एवरीथिंग? जस्ट टेल मी यस और नो। डू आई स्टॉप ऑन एवरी वर्ड एंड टेल यू कि भाई इस वर्ड का ये मीनिंग है? डू आई डू दैट? फिर और आपके साथ पढ़ने का रीजन क्या है? जैसे मैं पढ़ता हूं वैसे आप भी पढ़ना सीख जाओ कि कौन से वर्ड पे रुकना है। कौन से वर्ड्स आपको उसकी टोन बता रहे हैं कि किस तरफ जा रहा है पैसेज, वैसे ही पढ़ना है आपको। और दी ओनली थिंग आई वुड लाइक टू कन्वे टू ऑल ऑफ यू गाइस कि जल्दी नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, आराम से। वो इतने आराम से भी नहीं दैट यू थ्रो योरसेल्फ ऑन द काउच एंड कीप योर लेग्स अप एंड स्टार्ट हैविंग पॉपकॉर्न एंड देन रीड। ठीक है, आती बात समझ में ये? ठीक है, चलो। सो क्विक रिवीजन करेंगे कुछ कुछ चीजों का, क्विक रिवीजन। ओके, वर्ड्स वेरी स्मॉल थिंग्स गाइस। एक क्वेश्चन आपने देखा था, नॉट एट्रीब्यूटेड टू द ऑथर, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस कई बार ऐसा होते हैं कि आप अपनी पर्सनल जीके लगा देते हो। अपनी पर्सनल जीके प्लीज दूर रखना, कीप योरसेल्फ रिस्ट्रिक्टेड टू द पैसेज। और ये हेल्प तभी होती है जब आप आरटीपीसी करते हो, व्हेन यू रीड एंड स्टार्ट थिंकिंग व्हाट इज रिटन देयर, स्टार्ट विजुअलाइजिंग। जब तक विजुअल नहीं बने ना, बहुत समझ लेना कि यार मेरे से ना समझ में नहीं आ रहा है, पैसेज के क्वेश्चन गलत होंगे ही होंगे। गलत ऐसे नहीं कि पांचों गलत होंगे, एक या दो सही भी हो गए। मान लो आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से 2 सही हुए, स्कोर क्या आएगा आपका? 1.3। 1.3 भी नहीं आएगा इनफैक्ट। यस और नो? 3 तो गलत ही कर दिया आपने, 1 स्कोर आएगा आपका। यानी 12 मिनट में आपने 1 नंबर निकाला। मत करो ना, उससे अच्छा छोड़ दो। और ये छोड़ना कैसे समझ में आएगा कि मुझे ये पैसेज नहीं करना है? आफ्टर रीडिंग फर्स्ट पैराग्राफ 4-5 लाइंस, इजी स्लो, व्हेन यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग कि है क्या, दिख रहा है सामने, क्या चल रहा है, ओनली देन। क्लियर? ठीक है, चलो। बिफोर आई मूव अहेड गाइस, आई जस्ट टेल यू ऑल दैट वी हैव अ रिवीजन बैच गोइंग ऑन नाउ ऑन YT एंड दिस Unacademy ऐप आल्सो। 5 PM Unacademy ऐप पे करेंगे डेली, एंड 1 PM करेंगे YT पे। और ये रिवीजन होगा, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात नहीं होगी। जिनको रिवीजन नहीं करना है, बेसिक करना है, वो 9 AM पे कंटिन्यू करो। इंफॉर्मेशन कंटेनमेंट इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आप डरते हो। आप इसलिए इंफॉर्मेशन कंटेनमेंट नहीं हो पाता। ओके, टू एवरीवन, ओके, हूएवर इज लिसनिंग राइट नाउ, राजीव का क्वेश्चन है कि सर इंफॉर्मेशन कंटेनमेंट नहीं हो पाता। यूजुअल प्रॉब्लम। व्हाई राजीव? बिकॉज व्हेन आई सॉल्व द पैसेज, आई रीड द पैसेज। ओके, व्हेन यू रीड द पैसेज, यू रीड द पैसेज फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस इन माइंड। वैष्णवी को खुशी हुई, 5 आएगी कि सबको आएगी बिल्कुल। तो जिन लोगों की नहीं आया, सी गाइस, यू नो, ऑल ऑफ यू जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, वैष्णवी इज कंसिस्टेंट। आज 5 भी दिख रहे हैं, बट शी इज आल्सो सीन दैट टाइम जब एक सही हो रहा है, 5 में से 2 सही हो रहे हैं। जस्ट स्टे कंसिस्टेंट, थिंग्स इंप्रूव। ठीक है। वैभव, 9 AM जो बिगनर्स वाला होता है, दैट विल बी ऑल्टरनेट डे। ठीक है, मंडे टू सैटरडे ऑल्टरनेट डे चलेगा। ठीक है, एक दिन ऐप पे मंडे को, और ऐसे फिर ऑल्टरनेट डे होता जाएगा यूट्यूब पे और ऐप पे। डन? चलो, बिफोर आई गिव यू क्विक रिवीजन गाइस, ये है आपका बिगनर्स बैच। हाँ, दिस इज माय बिगनर्स बैच। राजीव, आई एम टॉकिंग अबाउट माय बिगनर्स बैच ओनली। कल यूट्यूब पे है ना बिगनर्स बैच, इज दिस, ये आपका YT चैनल, क्रैक मैनेजमेंट एग्जाम्स एंड प्रैक्टिस ऑन अनअकैडमी ऐप, ऑल्टरनेट डे चलेगा ये। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ऐप, YT, ऐप, YT, ऐप, YT। डन? बड़े दिनों बाद एक्यूरेसी आई आज सलोनी। हाँ, बहुत बढ़िया, खुश रहो बेटा, बहुत अच्छी बात है। टेलीग्राम ग्रुप दे देते हैं अभी ये लोग। दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप फॉर नोटिफिकेशंस। इस पे आ जाओ। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपस में बहुत हेल्प करते हैं, एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं राजीव।
चलना यार, अपने आप देख लेना वैभव वैसे क्या करता है, खुद डाल दे इनफैक्ट सबके लिए, ठीक है। अच्छा, एक तो Unacademy Combat on every Sunday, guys, you will not leave. You can use my code to unlock that. GSMB would be my code to unlock that. Okay. हाँ जी, रैंक 33। अरे वाह प्रियांशी, तो बढ़ो आगे, फिर सब्सक्रिप्शन लो जल्दी से। स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन बहुत जरूरी होती है गाइस, और ये Unacademy Combat you can win your scholarship and at the same time it's for assessment as well. बग्स बाउंटी का ध्यान रखना है प्लीज, वैष्णवी, वैभव, सलोनी, बग्स बाउंटी, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, ठीक है, एनी अप्रोप्रिएट कंटेंट यू सी। विकी, ठीक है, be the first one. If you come across any particular issue, you can always report that and you can claim your prize if you're the first one. Report any inappropriate content. You can see my 4 courses. Are you a beginner, Rajiv? Give this question to me on Telegram. हैशटैग वाला चैनल मैंने बताया था ना आप लोग को, देखा इसको आपने? ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑन यूट्यूब। दी हैशटैग अमेजिंग है फॉर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग रिलेटेड कंटेंट, बहुत मजा आएगा आपको। बट इट्स जस्ट दैट, और यू नो बिकॉज यू बी गोइंग फॉर मैनेजमेंट टुमारो, पिक इट अप, मजा आएगा, इसको देखा करो। चलो, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो कल डिस्कस कर लेंगे हम। कल का मैं आपको बता देता हूं, कल का जो सेशन होगा वो आपका नहीं, ये तो हो चुका है। एक सेकंड रुको, लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट टुमारोज क्लास, देन यू कैन ऑलवेज लीव। रुको, हाँ जी, कल 1 PM फॉर रिविजन बैच आई एम टॉकिंग अबाउट। 1 PM आरसी सॉल्व करेंगे एक्यूरेसी वे में, अलग तरीके से थोड़ा, कल और थोड़ा सा अलग करेंगे, ठीक है। 1 PM YT पे आरसी सॉल्व करेंगे रिविजन बैच में। Yeah, you go and see, no Lakshay. You'll, as it is, will get all the information there. Chalo. So before I sign off, guys, as Priyanshi, you also got 33rd right now. Quickly, transform it into your plus subscription. And everyone else, please get your structured preparation intact and stick to this batch of revision. Okay? नहीं 5 PM वाली तो है ही 5 PM वाली भी है बच्चे, सॉरी दोनों क्लासेस हैं, दोनों क्लासेस होंगी डेली। जब नहीं होगी तो बता दूंगा कि आज नहीं है, और दोनों के लिंक्स उस पे टेलीग्राम पे आ जाएंगे, ठीक है। दोनों के लिंक्स आ जाएंगे और दोनों क्लासेस होंगी, जब नहीं होगी तो बता दूंगा। डन, राइट? And when you subscribe, don't forget to use my code so that I get to know who all are going from my classes and they're picking up their structured program. I'll make your batches accordingly. Then I'll make your courses also accordingly. Rajiv, you asked me for which course. If you are looking for CAT 21 or 22? बोलो 21 ना, तो राजीव फिर एक काम करो, सबसे पहले स्टार्ट करो आरसी रिफ्रेशर से। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का रिफ्रेशर कोर्स है, उसे पहले उठा लो, ओके, एंड देन कीप आस्किंग मी, आई विल टेल यू, ओके। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। बस एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, अब ये भी नहीं चलेगा, ओके। चलो, see you tomorrow 9 o'clock, whoever the beginners are, I'll see you. YouTube channel link नमन टेलीग्राम ग्रुप पे आजा, मिल जाएगा। Bye guys, bye. Keep giving feedback, keep writing dedications, keep helping me also to see that what exactly you want and all, ठीक है। Tata, bye bye.